आप अपने क्वेश्चंस जो हैं वो यूट्यूब चैट बॉक्स में भी डाल सकते हो। जो लोग हमारे साथ जूम पर जुड़े हुए हैं वो भी अपने क्वेश्चंस जो हैं वो चैट में डाल सकते हैं। और इसी के साथ हम जो है वो आज के सेशन की शुरुआत करने जा रहे हैं। हेलो स्ट्रॉन्ग रॉक इज फ्रॉम Yes, nowhere, you sir. can say. He don't want to reveal his identity. So आज जो हम करने जा रहे हैं वो वीडियो लेस, यानी कि हमारा किसी का भी फेस नहीं दिखेगा इस पूरे टॉक शो में। और जो प्रेजेंटेशन है वो साथ में चलता रहेगा। तो उसी चीज को हम आज शुरू करने जा रहे हैं। आज का जो विषय है वो सूर्य के बारे में है। सूर्य के बारे में हम अभी इस तरह से समझेंगे कि जनरल ऑलमोस्ट सारी चीजें इस प्रेजेंटेशन में आ जाएंगी। और आगे भविष्य में हम स्ट्रॉन्ग रॉक के साथ इन्हीं सारे विषयों के टुकड़े करके हर एक टॉपिक पर एक बहुत ही ज्यादा डीप चर्चा करने के लिए जा रहे हैं। सो आज का ये कंप्लीट ओवरव्यू है हमारे सन के बारे में। और साथ ही हम अगर बात करें तो ये Recording in progress. जो अपना सेशन होगा तो वो इस तरह से होगा कि जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था किशन के साथ जर्नी टू द ब्लैक होल में, कि हम जो है वो साथ में ही डिस्कशन करते जाएंगे, बातचीत होती जाएगी। और आपके अगर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आपको वो चैट बॉक्स में डालने पड़ेंगे। तो चैट बॉक्स में डालने पर हम आपके क्वेश्चंस का आंसर आसानी से और सरलता से दे पाएंगे। तो अभी हम YouTube पर भी लाइव हो चुके हैं। जो भी लोग यहाँ पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सभी का स्वागत है। ऑलमोस्ट 7 लोग हमारे यहाँ ऑनलाइन जुड़ चुके हैं। और YouTube की अगर बात करें तो 3 से 5 लोग YouTube पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभी अगर हम बात करें तो हमारी शुरुआत है इन एस्ट्रोटॉक सीरीज की कंटिन्यूएशन की। तो वी होप कि हम ग्रो करें आप सभी के सहयोग के साथ, आप सभी के साथ। और आपके जितने भी दोस्त हैं, जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं, उनको शेयर करिए कि हमारा जो ये चैनल है उसे सब्सक्राइब करें, फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। और कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो हमें पूछ सकते हैं। यस स्ट्रॉन्ग रॉक, द स्टेज इज योर्स। Okay, sir. Thank you for the. First of all, I'll thank you and all Stargazing India team for giving me this opportunity, platform where I can share my knowledge. So, should we start the presentation or shall we Yes, wait yes, it's some more time? it's already ongoing. Okay, so, sir, I'll be sharing my screen through the camera only. Okay, okay, sir. Okay, no issue, no issue. Um, Sir, can we move directly to the first slide? So basically, the topics we are going to cover in today's presentation is the sun god, how stars are formed, types of stars, the sun, sunspots, and missions to study the sun. These are uh, these are 6 topics which we are going to cover today. And so let's start with our first topic, sun as a god. So as we know that in our Indian culture and our Hindu religion, we worship sun as a god. So in the similar way, in many other religions also, the sun is worshipped as a god. So in this part,
sun as a god. We'll study in which religion the sun is worshipped as a god in different forms. Sir, next slide, please. In ancient Egyptian civilization, the sun is worshipped as god Ra, and they believed that the sun is a supreme deity and creator of life on the earth. And you can also see the picture of god Ra according to the Egyptian culture. Sir, can you move to the next slide? In the Greek civilization, the sun was worshipped as Helios. They used to call their sun god as Helios, and they believed that the Helios is personification of the sun. Personification means basically sun का ही एक अवतार है Helios. तो वो उनको पूछते थे. Uh, in ancient Mesopotamian civilization, वहाँ पे sun को गॉड ऑफ जस्टिस तरी गॉड ऑफ जस्टिस के नाम से लाइक उनको गॉड ऑफ जस्टिस के कंसिडर किया जाता था. और फिर रोम में उन द सन वाज नेम्ड एज सोल इन्विक्टस, मींस अनडिफिटेबल. No one can defeat him. In ancient Rome, the sun was worshipped as Sol Invictus. In Zoroastrianism or Persian religion, the sun is regarded as symbol of Ahura Mazda, the supreme deity. The sun's residence represents the divine light and wisdom. And in a Native American culture and several native tribes such as Hapi, Naujao, and Pueblo people also worship sun deities or spirits in their religious beliefs. And as you know, we mostly have seen this picture at least once in our lifetime. Sun, the sun god riding in seven in the chariot carried by seven horses, and we also heard about the sun temple of Konark and many other sun temples which are famous. So basically, now we'll look what is the importance of sun god in our Hindu culture. Sir, next slide, please. So the idea of sun god's chariot is drawn by seven horses is also found in Yajurved and Samved. As we all know, there are four Veds in Hindu religion: Rig Veda, Atharvaveda, Yajurveda, and Samveda. So in Yajurved and Samveda, we can find the uh, we can find the we can find the idea of sun god's chariot carried by seven horses. And in Yajurveda, the names of these seven horses are also given, and they are named as Gayatri, Bharti, Unsnik, Jagti, Trisp, Anustap, and Pankti. And the saints who wrote the Vedas wanted to represent, like as you all know, the white light is framed of seven other colors. So they basically gave seven horses because of the white light made of seven colors. So uh, in ancient culture, our rishis were knowing that the white light is made up of seven colors, while scientists discovered it very lately in around 16th century, 15th, 16th century. Sir, can you move to the next slide? Yeah, already next. Yeah. Uh, Isaac Newton, the famous scientist, he uh, discovered that light is made up of seven colors in around 1663 AD. Sir, can you move to the next slide? Okay, so now if we are talking about ancient Indian culture and astronomy,
How we can forget the great Aryabhatta? So now we'll see Aryabhatta's contributions in the field of astronomy. Sir, can you move to the next slide? You Okay, just have to say so the next. okay, sir. Okay. Aryabhatta proposed the heliocentric model of our solar system. So basically, what is heliocentric model? If someone asks me to draw a solar system on a drawing paper, then I'll draw a sun in the middle and then other planets in the orbit around it. So that is heliocentric model. So he proposed that model and uh, told us that Earth is not the center of the universe. The sun is the center of our solar system, and Earth and all other planets revolve around it. And he also calculated the rotation of the Earth on its axis and elliptical path around the sun. Means, as we know that Earth take 24 hours to rotate on its axis and 365 days or 366 days to revolve around the sun. So at that point of time, he also calculated that. He he also determined that sun is moving in the sky because of uh, because of Earth's rotation and axial tilt. And he also developed method to predict when a solar eclipse or a lunar eclipse will occur. And he also explained the reason behind occurrence of solar and lunar eclipse. That when the sun comes, sorry, when the moon comes Moon between comes up. Earth and sun, we experience a solar eclipse, and when Earth come between sun and moon, we experience a lunar eclipse. And all of his observation and contribution were, it was not like that he thought and he just said. He calculated and proved them to the to other saints. And he also estimated the distance between sun and earth and the diameter of earth. So okay, so let's begin our next topic, that is how stars are formed. So uh, in our group, Stargazing India WhatsApp group, many of us have seen beautiful pictures of clouds which are in the space. And so what happens is when intermolecular clouds, they are stable. Like suddenly, the process of formation of stars begins suddenly in them. First of all, they are stable, and due to any other deflection like supernova explosion, a shock wave, or a black hole, these clouds, the matter and dust particles or the gas present inside these clouds starts to uh, uh, they start to, We can say attracting towards each other. yeah, basically they attract each other, and they start to वो अपने Revolve ही around ग्रेविटी की वजह से small. खींचे हाँ खींचा हाँ जी जाते हैं बेसिकली, आई जी। वांट टू से. सो So due to, धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे वो स्मॉल पार्टिकल्स जो है वो मान लीजिए कि दो पार्टिकल एक साथ जुड़ गए, दे विल बिकम हैवियर देन अदर्स एंड नाउ देन दे स्टार्टेड creating their own orbiting systems and all their own planetary system on a very microscopic level. yes sir. So this is basically a photo of a gas cloud. Next please. uh, the disturbance caused by any supernova explosion, shock wave, or a black hole leads to compression of the gas and dust particles present in the cloud to a point where the pressure of the gravity and the compression is enough to start a process of fusion from hydrogen to helium in the star's core. And when a star reaches a point where it can convert its hydrogen to helium, is known as protostar. And from a single gas cloud, multiple multiple protostars will be formed.
So it's not like that from a single cloud, a single star can only take a birth. From a single cloud, multiple protostars will be formed, and over the time, these nascent star will use gas and dust from original molecular cloud. So, uh, for their energy production, it will use the uh, gas and dust particles present. Yeah, so basically, this is a animation from which one can get an idea about how a star is formed. In a gas cloud, there is small brightness you can observe. ओके, सो अभी आप जो ये बात कर रहे थे, ये अभी क्या प्रोसेस हो रहा है वो थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे? सर अभी तो बस एक प्रोटोस्टार का जन्म ही हुआ है। तो अभी प्रोटोस्टार क्या करेगा कि उसके आसपास जो भी पूरा का पूरा क्लाउड तो स्टार में नहीं बदल जाएगा, तो उसके आसपास जो भी डस्ट रहेगा, गैस मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उन सब से अपनी एनर्जी लेगा। और बेसिकली अभी ये कंडीशन हो सकता है कि आसपास स्टार है और उसके बीच में स्टार है और उसके आसपास सारे गैस क्लाउड्स, गैस मॉलिक्यूल्स भी है। ओके, सो जब हम बात करते हैं कि सन कैसे फॉर्मेट, उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या फिर किस तरह से डेवलप हुआ, तो सन का अगर बर्थ जानना है, जैसे हमें अगर किसी भी 25 साल के युवा का बर्थ जानना है कि उसका जन्म कैसे हुआ होगा, तो उसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी जो इंसान जन्म ले रहा है उसका बर्थ कैसे हुआ। तो उसी तरह हम बात कर रहे हैं कि जैसे अगर सन जो है वो बॉर्न हुआ, तो वो कैसे बॉर्न हुआ होगा? हमारे पास अभी लाइव तो है नहीं विजुअल्स, तो हम क्या करते हैं कि जो सारे स्टार्स होते हैं, जो अभी बॉर्न हो रहे हैं, जिनका बर्थ हो रहा है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं कि वो कैसे जन्म ले रहे हैं। तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि ये जो बाकी हमारे जो सन है या फिर कुछ और स्टार्स हैं, सो वो भी किस तरह से जन्म हुआ होगा उनका। यस। तो सर जब ये प्रोटॉन स्टार एक मेन सीक्वेंस स्टार में कन्वर्ट, लाइक अभी जो हमारा सन है वो जिस स्टेज में है, उसको हम अभी एक मेन सीक्वेंस स्टार करेंगे कि ना ही तो वो अभी एक प्रोटॉन स्टार रहा है और ना ही वो कोई एक रेड जायंट या वाइट वाइट ड्वार्फ या कोई और स्टेज में है, तो उसको हम सीक्वेंस मेन सीक्वेंस स्टार बोलेंगे। और ये जो स्टेज होता है वो स्टार की लाइफ का मैक्सिमम पार्ट कवर करता है, फ्रॉम बर्थ टू इट्स एंड मैक्सिमम, लाइक छोटे बच्चे से छोटे बच्चे के जन्म लेने के बाद तक उसके मृत्यु तक, जो उसका मेन वर्किंग पार्ट होता है, लाइक आफ्टर द एज ऑफ 20 टिल द एज ऑफ 60 और 70, वो उसका मेन लाइफ का काम होता है, लाइफ का स्टेज होता है जहाँ पे भी वो वर्क करता है। तो उसी तरीके से सन का भी जो स्टेज, जो ये जो स्टेज चल रहा है वो उसको मेन सीक्वेंस स्टार्स बोलते हैं, जो भी स्टार्स इस स्टेज के थ्रू गुजर रहे हैं। हाँ जी। तो अभी हम स्टार्स को डिफरेंशिएट करेंगे, लाइक टाइप्स ऑफ स्टार्स। तो स्टार्स को अभी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, लाइक दो कैटेगरी के हिसाब से हम उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहला तो है कि टेम्परेचर के हिसाब से हम उसको डिस्टिंग्विश करें, और दूसरा है कि स्टार्स की कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से। तो अगर हम टेम्परेचर के हिसाब से स्टार्स को डिस्टिंग्विश करना चाहें, तो 7 टाइप से हम स्टार्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फर्स्ट जो आता है वो एम टाइप के स्टार्स होते हैं, जिनका टेम्परेचर 3800 डिग्री केल्विन से भी ज्यादा होता है, उनको हम एम टाइप के स्टार्स बोलते हैं। फिर आता है के टाइप के स्टार्स, जिनका टेम्परेचर 3800 डिग्री केल्विन से लेकर 5500 डिग्री केल्विन के बीच में रहता है। फिर आते हैं जी जी टाइप स्टार, जिनका टेम्परेचर 5000 डिग्री केल्विन से लेकर 7000 डिग्री केल्विन तक रहता है।
फिर आते हैं एफ टाइप स्टार, जिनका टेम्परेचर 7000 डिग्री से लेकर 9000 डिग्री तक रहता है। फिर आते हैं ए टाइप स्टार, जिनका टेम्परेचर 9000 डिग्री केल्विन से लेकर 12000 डिग्री तक रहता है। और फिर आते हैं बी टाइप स्टार, जिनका टेम्परेचर 12000 डिग्री से लेकर 30,000 डिग्री तक जाता है। और लास्ट में आते हैं ओ टाइप स्टार, जिनका टेम्परेचर 30,000 डिग्री से भी से भी ज्यादा। ज्यादा रहता है। ओके, तो ये हमने देखा कि स्टार्स को अगर हमें टेम्परेचर के हिसाब से बाइफरकेट करना हो तो किस तरीके से करेंगे। अगर अभी हमें स्टार्स को उनकी ब्राइटनेस, साइज, कलर, लाइक बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश करना हो तो कैसे करेंगे। तो अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डिस्टिंग्विश करने जाएंगे, देन वी कैन डिवाइड स्टार्स इनटू फाइव फाइव टाइप्स। फर्स्ट इज रेड जायंट, व्हाइट ड्राफ्ट, न्यूट्रॉन स्टार, रेड ड्राफ्ट एंड ब्राउन ड्राफ्ट। सो सर नेक्स्ट प्लीज। या This is image of red giant, and next please. So when a main, कोई भी एक मेन सीक्वेंस स्टार होता है जिसका मास सन के 8 टाइम्स के से भी ज्यादा होता है। से भी ज्यादा, सॉरी, व्हेन अ मेन सीक्वेंस स्टार स्टार लेस देन 8 टाइम्स मास ऑफ सन, जो कोई भी एक मेन सीक्वेंस स्टार होता है जिसका मास सन के मास से 8 गुना कम हो जाए और उसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाए, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में सन के कोर में हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है, तो हाइड्रोजन सारा खत्म हो जाए, तो वो अपनी ग्रेविटी के अंदर ही कोलैप्स ना कर जाए, उसके वो बचाने के लिए कोई फोर्स तो रहा नहीं, क्योंकि जो फोर्स पहले था हाइड्रोजन टू हीलियम कन्वर्जन था, जो कि ग्रेविटी के कोलैप्स को ओपोज कर रहा था, वो तो अभी हाइड्रोजन खत्म हो गया। तो अभी वो हीलियम को कार्बन के अंदर टर्न करेगा, लाइक हीलियम को कार्बन के अंदर चेंज करेगा। जिस तरीके से पहले वो हाइड्रोजन को हीलियम में करा था, अभी वो हीलियम को कार्बन में करेगा। और ये जो हाइड्रोजन सॉरी हीलियम फ्यूजन है वो आउटर लेयर्स में जाएगा और सन को एक्सपांड करेगा, जिस वजह से वो एक बड़ा सा रेड जायंट बन जाएगा। और जब भी देखने पे अगर हम सारे फिल्टर्स लगा के प्रॉपरली इनको ऑब्जर्व करें, तो कभी कभी ये हमें ज्यादा ऑरेंज दिखेंगे रेड के कंपैरिजन में। और फिर एक टाइम के बाद ये स्टेबल बन जाते हैं और एक्सपांड करते हैं। एंड नेक्स्ट प्लीज। अभी आते हैं व्हाइट ड्राफ्ट। व्हाइट ड्राफ्ट बेसिकली रेड ड्राफ्ट के, रेड जायंट के नेक्स्ट पीरियड है। लाइक एक स्टार था, वो पहले मेन सीक्वेंस स्टार था, फिर वो रेड जायंट बना, और उस रेड जायंट बनने के बाद वो स्टार व्हाइट ड्राफ्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज। आफ्टर रेड जायंट हैज शेड ऑल इट्स एटमॉस्फेयर, जैसे हमने सर वो बीच में एक या स्लाइड थी। हाँ, या जैसे हमने देखा कि रेड जायंट जो है वो उसका एटमॉस्फेयर एक्सपांड करेगा, तो एक टाइम आएगा जब वो पूरा इतना एक्सपांड हो चुका होगा कि उसका कोर और उसके एटमॉस्फेयर में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाएगा, और उसका जो एटमॉस्फेयर वो बेसिकली निकल जाएगा वहां से। तो जब रेड जायंट ने अपने पूरा एटमॉस्फेयर को शेड कर दिया है, तो जो भी फिर कोर बच गया है उसको हम वाइट ड्राफ्ट बुलाते हैं। ये करीब करीब अर्थ के साइज जितना होता है, बट उसका जो डेंसिटी था वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि कोर के अंदर ही सारे प्रोसेस हो रहे थे, तो कार्बन, लाइक सारे जो एलिमेंट्स थे, हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, वो सब वगैरह उसी कोर में होता है। और कोर, इमेजिन कीजिए ना, अर्थ सन कितना बड़ा था, उसको फिर रेड जायंट वो बना, उससे भी पहले की साइज से भी बड़ा हो गया, और अभी वो सारा जो मास है वो बहुत ही एक छोटी सी जगह अर्थ के साइज में आ गया है, तो वो बहुत ही मैसिव हो गया होगा। और अगर हम उसका एक एग्जांपल देना चाहें कि वो कितना मैसिव हो गया होगा, तो अ टीस्पून ऑफ इट्स मटेरियल वुड वे मोर देन अ पिकअप ट्रक। इतना ज्यादा वो हैवी हो गया होगा। एंड वाइट ड्राफ्ट कोई हीट अपनी प्रोड्यूस नहीं करेगा, ना ही वो अपनी लाइट प्रोड्यूस करेगा। फिर वो, समझिए ना, हॉट आयरन बॉल किस तरीके का होता है कि हमको पहले रेड रेड दिख रहा है, फिर वो धीरे 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 ठंडा हो जाता है।
उसी हिसाब से कि जो वाइट ड्राफ्ट है वो ओवर द बिलियंस ऑफ ईयर्स इट ग्रेजुअली कूल्स डाउन. Despite the name, white dwarf can emit visible light that ranges from blue, white to red. एंड कभी कभी साइंटिस्ट को ये जब ऑब्जर्व ये करते हैं सारे स्टार्स को, तभी कभी कभी उनको ये एक डस्टी डिस्क ऑफ मटेरियल या डेब्रिस और कभी कभी प्लैनेट के साथ भी मिलते हैं. And in about 10 billion years after its time as a red giant, the sun will become a white dwarf. So सन के जब 10 रेड जाइंट बन जाएगा तो उसके 10 बिलियन सालों के बाद हमारा जो सन है वो एक वाइट ड्राफ्ट में कन्वर्ट हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. अभी जो हम इमेज दिख रहे हैं वो न्यूट्रॉन स्टार का इमेज है. नेक्स्ट प्लीज. अभी जो दो स्टार्स हमने पहले देखे, रेड जायंट और वाइट ड्राफ्ट, वो दोनों सीक्वेंशियल स्टार्स है. मीन्स पहले कोई भी स्टार रेड जायंट बनेगा फिर वो वाइट वाइट ड्राफ्ट बनेगा. और ये अलग टाइप ही है पूरा कि अगर वो स्टार रेड जायंट नहीं बना तो मीन्स जो मेन सीक्वेंशियल स्टार होगा उसकी जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगी, उसका जो भी मास रहा होगा उसके हिसाब से अगर वो रेड जायंट नहीं बनता है तो फिर वो बाकी के कुछ टाइप में से एक बनेगा. तो उसमें से एक टाइप है न्यूट्रॉन स्टार. न्यूट्रॉन स्टार बनता है जब भी मेन सीक्वेंस स्टार का मास होता है वो 8 से लेके 20 टाइम तक होता है हमारे सन के कंपैरिजन में. और जब वो बेसिकली कोई भी स्टार अपना टाइप तभी चेंज करता है जब उसके कोर में हाइड्रोजन खत्म हो जाए. खत्म हो तो यहीं पे भी यहाँ पे भी वही होगा कि जब भी उस स्टार का हाइड्रोजन जो है वो खत्म हो जाएगा तो स्टार जो है वो हीलियम को कार्बन में कन्वर्ट करना चालू करेगा. बट एक टाइम आएगा जब भी स्टार का हीलियम भी खत्म हो जाएगा तो वो क्या करेगा, वो सिकुड़ जाएगा, लाइक श्रिंक हो जाएगा. और और भी गर्म होके जो कार्बन, हीलियम को उसने कार्बन में कन्वर्ट किया वो कार्बन को नियोन में कन्वर्ट करता जाएगा, जो भी जो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. और ये तब तक चलता रहेगा जब नियोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट नहीं हो जाता, और फिर ऑक्सीजन सिलिकॉन में, और सिलिकॉन फाइनली आयरन में कन्वर्ट हो जाता है. तो न्यूट्रॉन स्टार क्या करता है, उसका हाइड्रोजन खत्म हो गया है, सारा हीलियम में कन्वर्ट हो गया, तो वो कोई भी जो स्टार है जब उसका मास 8 से लेकिन 20 टाइम्स तक सन का मास रहेगा तो वो न्यूट्रॉन स्टार में कन्वर्ट हो जाएगा. न्यूट्रॉन स्टार में हीलियम जो है वो कार्बन में कन्वर्ट होगा, कार्बन जो है वो नियोन में कन्वर्ट होगा, नियोन ऑक्सीजन में कन्वर्ट होगा, ऑक्सीजन सिलिकॉन में कन्वर्ट होगा, और सिलिकॉन फाइनली आयरन में कन्वर्ट होगा. और ये जो प्रोसेस है वो पहले जो प्रोसेस हाइड्रोजन हीलियम के फ्यूजन से आ रही, जो एनर्जी हाइड्रोजन और हीलियम के फ्यूजन से आ रही थी, न्यूक्लियर फ्यूजन से, जो कि के ग्रेविटी को अपोज कर रही थी ताकि स्टार कोलैप्स ना हो जाए अपनी ग्रेविटी के अंदर. तो ये जो प्रोसेस है सारी एलिमेंट्स के कन्वर्जन की, वो भी एनर्जी रिलीज करेगी और वो भी स्टार को ग्रेविटी के अंदर कोलैप्स होने स्टेबल से रखने की कोशिश बचाएगी, हाँ करेगी। स्टेबल रखेगी. और जब भी कन्वर्जन होता है तो उसका जो फ्यूल होता है वो कम रहता है. लाइक अगर पहले, बेसिकली ये एक अच्छा वे नहीं है स्टार के मास को मेजर करने का, बट लेट्स से फॉर एग्जांपल उसके पास पहले 2 टन हाइड्रोजन था, तो फिर जब वो हीलियम में कन्वर्ट हो तो 2 टन हीलियम नहीं बनेगा, हीलियम थोड़ा सा कम बनेगा. कम बनेगा फिर क्योंकि एनर्जी ऐसे रिलीज हो ऐसे जो जाएगी। भी, हाँ जी, यस सर. तो इस तरीके से जो फ्यूल है वो थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा. और जब भी सारा का सारा सिलिकॉन आयरन में कन्वर्ट हो जाएगा तभी जो फ्यूल बचेगा वो बस कुछ ही दिनों तक चल सके, सिर्फ इतना ही फ्यूल बचेगा. क्योंकि जितना छोटा होता जाएगा, जितना वो डेंस होता जाएगा, उसका कंजम्पशन भी उतना ही ज्यादा होता जाएगा। मान लो कि अगर यस हम सर. नॉर्मल डेज में 5 रोटी खाते हैं तो वो समझो ना कि 1 घंटे में 5 रोटी खाने की ताकत पर आ जाएगा। हम्म. और आयरन के बाद वो क्या करेगा, कोई और हैवियर एलिमेंट में उसका जो आयरन है उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा ताकि वो कोलैप्स ना हो जाए. बट जब तक वो आयरन तक चेंज कर चुका होगा
तो इतना ज्यादा उसके पास एनर्जी बची नहीं रहेगी स्टार के कोर में कि वो आयरन को कोई और हैवी एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट कर सके। सो क्या होगा कि ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाएगा, और कोर इतना फोर्स प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा कि वो ग्रेविटेशनल फोर्स को अपोज कर सके, तो वो स्टार अपने अंदर ही कोलैप्स हो जाएगा और एक शॉकवेव जनरेट करेगा और बैक टू अपने ओरिजिनल साइज में चला जाएगा। एंड जो शॉकवेव है वो पूरे सन उस स्टार के कोर से लेके आउटर एटमॉस्फेयर तक ट्रैवल करेगा और फिर स्पेस में चला जाएगा। और ये जो एक्सप्लोजन होगा उसको हम एक सुपरनोवा से भी जानते हैं। और जो सुपरनोवा के बाद बचेगा वो होगा एक सुपर डेंस न्यूट्रॉन स्टार। उस सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद ही बचेगा। नेक्स्ट सेट प्लीज। यहाँ ये एक न्यूट्रॉन स्टार था। अभी इसका कोई सीक्वेंशियल स्टार नहीं है। न्यूट्रॉन स्टार अगर बनता है तो वो फिर एक सुपर डेंस स्टार में कन्वर्ट हो जाता है एट द एंड ऑफ इट्स लाइफ। अभी हम दूसरा टाइप देख रहे हैं, रेड ड्राफ्ट। तो रेड ड्राफ्ट होते हैं वो बहुत स्मॉल सीक्वेंस स्टार होते हैं, जस्ट अ फ्रैक्शन ऑफ सन साइज एंड मास। वो उनका वेट 8 टाइम्स 20 टाइम्स या इवन 8 टाइम्स तक भी नहीं होता। तो अभी तक हमने देखा वो था कि सन से अगर ज्यादा मास का हो तो क्या करेंगे, अब क्या होगा। अभी हम देखेंगे कि सन से अगर कम मास का स्टार हो तो क्या होगा उसके साथ। सो just वो red dwarf are a fraction of sun size and mass. So they are the coldest and appear more orange in color than red. When a red dwarf produces helium via fusion in its core, it releases energy, brings material to star surface where it cools and shrinks back down, taking a long fresh supply of hydrogen to the core. रेड ड्राफ्ट में क्या होगा कि जब भी कोर हीलियम प्रोड्यूस करेगा तो एनर्जी रिलीज होगी और वो एनर्जी ऊपर जाएगी, ऊपर से हाइड्रोजन लेगी और वापस कोर में आएगी। ये प्रोसेस को हम इस तरीके से इमेजिन कर सकते हैं कि एक डॉल्फिन या व्हेल सी में होती है, उनके पास गिल्स नहीं होते तो उनको सरफेस पे आना आना पड़ता है ऑक्सीजन लेने के लिए। तो डॉल्फिन पानी के अंदर से सरफेस पे आई, ऑक्सीजन लिया, फिर से पानी के अंदर आ गई। यहाँ पे वही हो रहा है कि फ्यूजन हुआ, हीलियम प्रोड्यूस हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, एनर्जी ऊपर गई, हाइड्रोजन लाइक लेके आई और फिर से कोर में आ गई। और भी ये प्रोसेस कॉन्स्टेंटली होता रहेगा। तो रेड ड्राफ्ट कैन स्टीडली बर्न थ्रू देयर एंटायर सप्लाई ऑफ हाइड्रोजन ओवर ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स विदाउट चेंजिंग देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स अनलाइक अदर स्टार्स। तो दूसरे अभी स्टार्स में तो कैसा देखा कि पूरा का पूरा उनका स्ट्रक्चर ही चेंज होता रहा था जैसे वो स्टेट चेंज कर रहे थे। जबकि रेड ड्राफ्ट में स्टेट में चेंज करने का कोई टेंशन नहीं है, वो अपना प्रोसेस आराम से ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स तक चला सकता है। Scientists think some low mass red dwarf, those with just a third of sun's mass, have lifespan longer than current age of the universe, up to 14 trillion years। भी ये भी एक मिस्ट्री है कि किस तरीके से इतनी सारी उनकी लाइफ होती है। तो red dwarfs are also born in much greater numbers than more massive stars. Because of that, they live so long. Red dwarfs make up around 75% of our Milky Way galaxy stellar population। मिल्की वे गैलेक्सी के अगर हम जो भी जितने भी सारे स्टार्स है उनकी पॉपुलेशन देखें तो 75% हमको रेड ड्राफ्ट ही मिलेंगे। मीन्स ये बहुत ही कॉमन टाइप के स्टार्स है और बहुत ज्यादा अमाउंट में ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ब्राउन ड्राफ्ट भी। ब्राउन ड्राफ्ट को अगर हम स्टार कंसिडर करें या ना करें ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि टेक्निकली ये स्टार्स है नहीं और ये प्लैनेट्स भी नहीं है, क्योंकि इनका मास और साइज प्लैनेट्स की जो डेफिनेशन है हमारा उससे ज्यादा है, और इनका मास और साइज जो स्टार की हमारी डेफिनेशन इवन रेड ड्राफ्ट स्टार की उससे भी कम है। और ये ना ही कुछ लाइट एमिट करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। इनका अगर हम आपको मास जानना है कितना होगा तो कंपैरिजन में देख सकते हैं कि 13 से लेके 80 टाइम्स तक जुपिटर का मास होता है, उतना इनका मास हो सकता है। और ये कोई लाइट भी एमिट नहीं करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी है कि इनको अगर हम स्टार कंसिडर करें या ना करें। और ये
प्लैनेट्स के जैसे भी हो सकते हैं, जिनके गैस गैस प्लैनेट्स भी हो सकते हैं, या डस्ट अराउंड द स्टार्स के फॉर्म में भी ये एग्जिस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट। ओके, तो अभी तक तो हमने देखा कि टाइप्स ऑफ स्टार्स हमने देख लिए, अलग अलग तरह के स्टार्स का फॉर्मेशन देख लिया, किस तरीके से उनका जन्म होता है। अभी हम देखेंगे हमारे हमारे सन के बारे में। तो ये एक एनिमेशन है जहाँ पे सन पूरा का पूरा 360 डिग्री में आप देख सकते हैं। अभी सन और अर्थ की अगर हम कंपैरिजन करें, तो सन उतना बड़ा है कि उसमें 13 lakhs टाइम्स अर्थ आ जाए। लाइक 13 लाख अर्थ अगर हम फिट करें, एक स्पीयर के शेप में बनाए, तो उतना बड़ा हमारा सन है। और लाइट को 8.24 मिनट्स लगते हैं अर्थ तक आने के लिए। और सन का जो डायमीटर है, अगर वो हम अर्थ से कवर करना चाहे, तो वन 109 अर्थ विल बी रिक्वायर्ड टू कवर द डायमीटर। नेक्स्ट प्लीज। Now let's look at some physical characteristics of the sun. The mean diameter of the sun is around 1.392 into 10 raised to 6 meters. Equatorial radius means radius around its equator is around 6.9 into 10 raised to 5. The mass of the sun is around 1.8 into 10 raised to 30 times. 30 times means 10 raised to 30 kg. इतना ज्यादा सन का मास है। इक्वेटोरियल सरफेस ग्रेविटी मीन्स उसके इक्वेटर के पास जो सरफेस पे ग्रेविटी है, वो है 274 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। ये बहुत ही इमेंस अमाउंट ऑफ ग्रेविटी है। और एस्केप वेलोसिटी अगर हम देखें, एस्केप वेलोसिटी आई होप सबको पता ही होगा, और जिनको नहीं पता उनके लिए, कोई भी प्लैनेट को अगर हमें छोड़ के निकलना है, उस प्लैनेट की ग्रेविटी को बाहर निकलना है, स्पेस में, ओपन इंटरस्टेलर स्पेस में जाना है, तो हमें जो स्पीड रिक्वायर होगी उसको हम एस्केप वेलोसिटी बोलते हैं। तो जो अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है वो अराउंड अप्रोक्सीमेटली 11 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से है, जबकि सन की एस्केप वेलोसिटी है वो है 117.7 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से। फिर टेम्परेचर ऑफ सरफेस जो है वो 5778 डिग्री केल्विन के हिसाब से, या 6000 डिग्री केल्विन के हिसाब से रहता है। वो हर पार्ट पे अलग अलग रहता है। लाइक अगर फिर सनस्पॉट होगा ल्यूमिन तो वहां पर डाउन होगा, या फिर कोई और रीजन होगा, ब्राइट रीजन होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत ज्यादा होगा। ऑन एन यस एवरेज सर। यू कैन से कि 6000 के आसपास का उसका टेम्परेचर हो सकता है। यस सर। फिर लुमिनोसिटी अगर हम देखें, तो वो है 3.8 इंटू 10 to 26। एंड एवरेज डेंसिटी अगर हम सन की देखें, तो वो है 1.4 इंटू 10 to 3। अभी हम रोटेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं सन की। तो सन की जो पहले तो लाइक आप बहुत शौक होगी ये दो यहाँ पे देख के कि एट इक्वेटर एंड एट पोल्स। तो इसको भी मैं एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन पहले इस स्लाइड को समझ लेते हैं कि सन जैसे अर्थ एक एंगल पे टिल्ट है उसके एक्सिस पे, सन भी जैसे अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, सेम वे सन भी अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है। और जिस तरीके से अर्थ अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, सन भी अपने एक्सिस पे टिल्टेड है, और वो है वो 7.25 डिग्री टू द एलिप्टिक पर टिल्टेड है। फिर साइडल रोटेशन पीरियड जो सन है वो 16 डिग्री लेटीट्यूड पे 25.28 डेज है। उसके इक्वेटर का जो रोटेशनल पीरियड है वो है 25.05 डेज। और एट पोल्स, सन के पोल्स पे जो रोटेशनल पीरियड है वो है 34.3 डेज। शॉक हुए होंगे, आई नो, इसका एक्सप्लेनेशन भी आ रहा है, जस्ट अ सेकेंड। और रोटेशनल वेलोसिटी जो है सन की इक्वेटर पे वो है 7.1 इंटू 10 to 3 किलोमीटर पर आवर की रोटेशनल वेलोसिटी है। So in this picture, you can clearly observe that sun has different rotational speed at different parts. Somewhere it's around 35 days, 31 days, 28 days, 26 days, and equator revolves at around
rotates at around 25 days. So what is the reason behind it? And so the reason is sun is not made up of an ordinary matter. Like uh, three basic forms of matter are liquid, solid, and gas. And the Earth is made up of all the three things. But Sun is made up of none of these things. It is made up of fourth state of matter, known as plasma. Plasma. And plasma doesn't behave like the solid, liquid, and gas behave. So at some point, the plasma revolves very fast. Sorry, rotates very fast, and at some point, it rotates very slow, due to which the sun has different rotational speed at different points. Like at poles it rotates at around 35 days, and its equator it's about 25 days. So the And reason behind nowadays, this is if you plasma. guys want to check this rotation, right? सो हमारे लिए अभी का जो टाइम है वो बेस्ट है क्योंकि अभी सन के ऊपर बहुत सारे सन स्पॉट्स हमें दिखाई देते हैं जो कि अलग अलग उसके रीजन में है। सो होगा क्या कि जब आप कंटिन्यूअसली सन को प्रॉपर विथ सेफ्टी मेजर्स आप ऑब्जर्व करोगे तो उनकी जो स्पीड होगी वो आपको डिफरेंशिएटर का आइडेंटिफिकेशन देगी कि जहां अगर ये जो सेंटर में है तो वो बहुत फास्ट मूव कर रहा है, अगर वो ऊपर जा रहा है तो वो स्लो मूव होगा। उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे, लेकिन प्लीज कंटिन्यू। या Next, please. Now, as we all know that Earth revolves around the sun in our solar system. In the same way, sun and our whole solar system revolves around the center of Milky Way galaxy. So mean distance from Milky Way galaxy's core uh, of the sun is approximately 2.5 into 10 raised to 17 kilometer. And if we convert that into light year, it will be around 26,000 light years. Means if you want to travel from sun to the core of Milky Way galaxy, it would, and if you travel at the speed of light, it would take 26,000 years for you to reach there. So that much is the distance between sun and core of Milky Way galaxy. And galactic period means the time taken by our sun to revolve around galaxy completely. Like Earth take 365 or 366 days to revolve around the sun completely. Sun takes approximately from ranging. Sun takes uh, these numbers are in years only. Sun take around 2.25 to 2.250 into 10 raised to 8 years, light years, to complete this distance. And velocity of the sun at which it's revolving around the center of Milky Way galaxy is approximately 220 kilometers per second. Next, please. Now, as in one of our section, we have discussed about classification of stars on basis of the temperature. So, if we want to classify our star, that is sun, on the basis of its surface temperature, mention that the all the classification of the stars basis on their temperature are done of the surface temperature of the star. Like scientists measure the surface temperature of the star and then they classify it. It's not the temperature of the core or its atmospheric layers. So our sun's surface temperature is about 6,000 degree Kelvin. So it falls in the G type star, whose range is around 5,500 degree Kelvin to 7,000 degree Kelvin. Uh, Now, if you want to understand the atmosphere of the sun, um, I'll want you to imagine a burger with a sauce top on tomato sauce top on it, a bun, then vegetables and other sauces, then aloo tikki, then again vegetable and sauces, and bun. So with this, the aloo tikki is the surface of the sun, and photosphere is the vegetables and sauces just above the aloo tikki. Means photosphere is the layer which is just above the surface layer of the sun.
We are talking about atmospheric layers. Then also after this, we'll also dig deep into the core and other layers beneath the surface of the sun. So photosphere is the first layer just above the surface of the sun. Then there is chromosphere. Uh, Chromosphere is around 2000 kilometers, and we cannot see this daily. uh, Chromosphere we can only see on some special events like solar eclipse, total solar eclipse. And above chromosphere there is corona. The corona layer is expanded into space about millions of kilometers. Like the thickness of the corona layers is about millions of kilometers into the space, and it's about chromosphere. And the corona is also not visible directly. If we want to observe chromosphere and corona, we have to create a total solar eclipse, or we otherwise we have to wait for solar eclipse. And photosphere, you can consider the sauces and vegetables just above the aloo tikki. Chromosphere is the bun above sauces and vegetables, and the corona is the ketchup above the bun. Uh, Next, please. Corona and chromosphere both are visible during total solar eclipse, and the reason behind this is they have very low density matter, so we are not able to see them even with telescopes daily on a regular day. Next, please. Just I want to share that if anyone have observed the corona through their eyes or with some equipments, प्लीज चैट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं कि आपने देखा है, कब देखा है और कैसे देखा है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं. Okay, is it connected stronger? Sir, should I continue? Yeah, yeah, yeah. Please, please. Okay. Um, the next slide. So now just you saw the photo of the sun, and whenever on internet you see a photo of the sun, you basically see the photo of a photosphere layer of the sun, and it's the lowest layer of the sun's atmosphere, and we can see it directly. And sometimes we also misconceptionally understand it with the surface of the sun, but it's not. And its average temperature is about 5500 degree Celsius to 6000 degrees Celsius. And in Fahrenheit, if you want, then it's around 9932 degrees Fahrenheit. The temperatures can vary across the surface with the cooler regions and corresponding to the sunspots. It's and whatever elements or metals we talk about that are in the sun are present in the photosphere only, and it's mainly composed of hydrogen gas with solar with smaller amounts of helium and trace of elements like oxygen, carbon, and iron. And as we have discussed earlier, made up of plasma. The layer has molten appearance because it's made up of dark edged region, and it's constantly in motion. Like the crust of the earth is stable, it's not moving, but the so, chromosphere is made up of plasma, so it's constantly moving. And conventional currents are rising and falling. Conventional currents means you can uh, compare that with currents in our ocean. Whenever we visit beach, we see some waves rising and falling. In the same way, the plasma uh, in photosphere rises and falls. That we call as conventional current rising and falling. These currents cause the photosphere to look like it's boiling. It exhibits various solar features including sunspot, faculae, and granulation. Next slide, please. Uh, Sir, can you pause the video?
Yeah. Uh, this small clip is of granulation. Granulation is basically if you have seen boiling of water, then at after a certain temperature of the water, what happens is bubbles from bottom of the vessel starts to come up, and when they reach surface of the water, they burst up and release energy, and again they go down, and other bubbles rise up to the surface of the water, and they release energy. So in this video you can see bubbles rising up and releasing energy from the surface of the water. This process is called granulation. The same type of process happens in the photosphere layer of the sun. Now let us look at some features of photosphere. Granulation, as we have discussed, they now sunspots. Sunspots are we'll definitely discuss about this after the sun, after the topic of the sun in detail about the sunspot. But they are the dark region that appear on the sun's surface, and they are caused by sun's magnetic field. Now, how they are caused by sun magnetic field? Again, we'll discuss that afterwards. And they can be up to 1 lakh kilometers wide. Like the, their size can be incredibly long. If any one of you is observing the sunspot, then he or she will be knowing that how much large these sunspots are, and they are periodic in nature. Means after every 11 years, these sunspots uh, peak and then they descend. Then they again peak and then they descend. And luckily, this time the peak of the sunspots is there. So if anyone wants to observe, then they can observe the sun and sunspots, study them with necessary equipments and safely. And then there are faculae. Faculae are the bright regions that appear on the sun's surface. They are caused by sun's magnetic field. Faculae are typically found near the sunspots. Next, please. Prominences. Prominences are large flame-like structures that rise up from photosphere. They are caused by sun magnetic field. Prominences can be long up to 1 lakh kilometers. Nowadays, if you want to see the best photos of prominences, our group member Sri Prabhu S. Kutty is clicking phenomenal shots of these prominences, and you guys can check his Instagram for these kind of prominences photos and sunspots and this solar flares and all these things. Yes, please. Uh, in this picture, you can see sunspots. These are small, sorry, not small. These are black regions Yeah, on the. comparing to the surface of the sun, is these are the small ones. Yeah, if we compare it with the surface of the sun, then they are Yeah. small. But As in other these ways, they are small not dots small. are 2 or 5 times larger than our Jupiter. Yes. Yes. Next, Please, please. please continue. Next Okay. slide, please. These are prominences, and in this picture also you can compare them with the approximately size of the Earth. And prominences can also be said like solar flare or solar, basic, not solar storm, but uh, prominences are those rising currents and falling down. They are prominences. Now we'll study about chromosphere, which is the second layer of sun's atmosphere after photosphere. And if you want to see the chromosphere, then you have to wait for a total solar eclipse, or otherwise you need to create situations of a solar eclipse. Then you can observe and study chromosphere. Next slide. It is situated above the photosphere. It is 1,000 times more fainter than photosphere. Basically, it's more thin than photosphere. Sorry. Characteristics flash seen during total solar eclipse.
in pink color is produced in chromosphere because it's combination of emission of red, blue, and violets Balmer line. If anyone remembers from class 11th and 12th chemistry, we study all the spectral lines in chemistry. So the chromosphere uh, is seen in a pink color during total solar eclipse. The reason behind that is it's emit uh, solar this chromosphere emits the wavelength of red, blue, and violet Palmer line. The temperature of the chromosphere is very less compared to photosphere, ranging from 4,000 to 25,000 degree Celsius. Next, please. The density of chromosphere is about 100 million times less than density of the Earth's atmosphere. Here we can compare the density of Earth's atmosphere and density of the chromosphere, and we can easily understand that why we cannot see it regularly. Next slide. Features of chromosphere. Spicules. Spicules are the most common feature of chromosphere. They are jets of plasma that rise from photosphere and can reach heights up to 10,000 kilometers in space. Then prominences. Prominences are large flame-like structures that rise up from chromosphere. They can be up to 1 lakh kilometers long. Filaments. Filaments are long, thin structures. They are made up of cool plasma. They can be seen as dark threads against bright background of the chromosphere. सो फिलामेंट्स उन लोगों को याद होगा कि जो लोग बल्ब यूज करते थे तो बल्ब में हमेशा फिलामेंट रहता था और सोलार फिलामेंट्स का जो स्ट्रक्चर है जो लुक है वो भी उसी के सिमिलर रहता है सो यू कैन रिकॉल योर ओल्ड मेमोरीज टू यस प्लीज Yes, sir. In this picture, you can see spicules and prominences. Next, please. Now, let us understand about corona, which is the last layer of atmosphere of the sun. यस एंड दिस वन इज नॉट फ्रॉम द चाइना Yeah, definitely. Next, please. The corona lies above the chromosphere and extends up to millions of kilometers in the space. And corona is extremely hot if we compare to photosphere or surface of the sun, or even to chromosphere. Chromosphere is uh, colder than photosphere, but corona is more hot than surface of the sun or photosphere. The temperatures are ranging from 9,99,726 degrees Celsius to 2,99,976.85 degrees Celsius. And the reason behind this is we don't know. We don't know the reason behind such a increase in वाच यू temperature. यूज Uh, डिफरेंस यस the corona is mainly composed of ionized gases, mainly hydrogen and helium. It appears as pale, wispy hollow of light surrounding the sun during total solar eclipse. The corona structure can change over time, influenced by sun magnetic field. And we here in news or in our group also we see that news regarding solar wind or solar flare. And the corona is the main region from where all these things passed. So it's constantly in motion with streams and loops of plasma flowing outward of the sun. Next slide. Features of corona. Coronal holes, bright streamers, bright and dark regions known as coronal holes. Uh, Next, in the uh, coronal holes image.
In this image, you can observe the black region and bright region. The black region are sunspots or coronal holes, you can say them. Okay. Now we'll study about internal structure of the sun. So this is all the things which are below the aloo tikki, which is sauce and veggies and the bun. We can So consider inside the aloo tikki. yeah, under the aloo tikki or below Ji. aloo tikki. Yes. Next, please. Now you might be having question that how we haven't leaked the sun yet and how we are able to know what's inside it. So technology called seismology, which study earthquake waves through which we are able to find what is below the surface. And if you know that below earth surface there is crust, there is mental layer, there is core, inner core, outer core, etc. All different types of layers are there. So we haven't digged into earth so deep that we can reach to the core. Even the uh, deepest hole till now is so polar super deep hole from Russia, and that is around 11 kilometers deep, and that we haven't reached till core through the help of that hole, but we are able to study all of these different layers through seismology. Next, this is convective zone. The convective zone is the vegetable and sauce just below the aloo tikki. Like it's the first layer below the surface of the sun. Then there is radioactive zone, and then there is core. So first we'll study about convective zone. Next, please. Convective zones extend from just below the sun's surface, where the photosphere is located, down to the deep depth of around 2 lakh kilometers. It represents the outer part of the sun's radioactive zone. Uh, Below the sun's surface, till 2 lakh kilometers, there is convective zone. The temperature of this convective zone ranges from about 2 million to 5500 degree Kelvin. As the distance increases from the core, the temperature decreases in the convective zone. Means the region which will be nearest the core, which will be touching the radioactive zone and which will be the near to the radioactive zone, will have higher temperature near about 2 million degree Kelvin, and the region which will be near to the surface of the sun, photosphere of the sun, will have temperature about 5000 to 500 degree Kelvin. And in convective zone, it's got its name from the transportation of hot plasma through convection. So due to transportation of energy uh, through the process of convection, the zone got its name as convective zone. Next slide. Hot plasma rises from the surface in upwards, carrying energy with it, and then cools and shrinks down in downdraft. The convective zone is very dynamic and active layer. It constantly changing. It is home to various features including granulation, supergranulation, and sunspots. Means uh, before we have discussed about the process of granulation, and we also saw and process of water boiling. So that happens inside this convective zone. From the radioactive zone, and hot plasma carries energy and it reaches near the surface of the sun, where it delivers the energy, and again back it falls down to radioactive zone. And this layer plays an important role in heating of photosphere also. Now we'll study about radioactive zone. Radioactive zone extend from bottom of convective zone approximately 2 lakh kilometers below the sun surface, about zero point 0.7 solar radius. So if you want to compare the thickness of radiative zone to solar radius, it's about zero point 0.7 solar radius, and one solar radius is approximately 66 6 lakhs
95,700 kilometer, and it forms majorly of sun's interior part. So basically it's the bun from the burger. And in radioactive zone, it energy is transported through the process of radiation. The photons produced in the sun's core through nuclear fusion carries energy outward. And here one surprising fact will come in front of you. The distance from the center of the sun to its surface is roughly about 7 lakh kilometers. But the time light energy takes from the core to reach the surface of the sun, yeah, millions of years. Means from the surface of the sun till the surface of the earth, light takes around 8.24 minutes. But from the core, where the light or the energy is produced through nuclear fusion, till from the core to the surface of the sun, the light takes millions of years to reach there. And the radioactive zone is responsible for about 99% of sun's energy to the surface, transportation of 99% of sun's energy to the surface. And um, okay, next slide. Now we'll look at the core of the sun, and in this picture also you can understand the structure of the sun in detail. Next, please. The core is located at center of the sun. It extends from the sun's center to about 25% of its radius, about 1,40,000 kilometers in diameter. The core is extremely hot and dense. The core the temperature of the core is estimated to be around 15 million degree Celsius. The core is the site of nuclear fusion reaction, especially the process known as proton-proton chain. In this process, so basically there are two type of chains through which the nuclear fusion reaction happens. One is proton-proton chain, and other one is CNO cycle, which is carbon nitrogen oxygen cycle. So here in the sun core, the proton chain appears, and not carbon nitrogen cycle, because carbon nitrogen cycles requires more temperature and more pressure than what it is present in the sun's core. So because we are having less pressure and temperature compared to what is required for CNO cycle, we go for PP cycle, that is proton proton chain. In this process, hydrogen nuclei protons combine to form helium nuclei through the series of fusion reaction, releasing tremendous amounts of energy in the form of gamma ray photons. As we all know, the sun radiates all the kinds of radiation. So the energy is formed in gamma ray photons. It is responsible for gathering energy that powers the sun. The fusion reaction at the core convert a small fraction of sun's mass into energy following the energy mass equivalent principle, the famous E is equal to mc square equation by Einstein. And this energy is in the form of gamma rays. It has high density due to immense gravitational pressure exerted by the overlying layers of the sun. The density of the core is estimated uh, to be around 150 times of density of the water. Density of the water we take value as 1. So if you want to calculate anything, and you you want to use the density of the sun, then it's around 150 times of density of the water. Then, as a byproduct of this fusion reaction in the core, vast number of neutrons are produced. These neutrons are nearly massless particles, but they can pass through sun and travel through space, providing valuable information about the process occurring in the core. So, with protons, these neutrons are also formed in the nuclear fusion reaction, and neutrons doesn't contain any type of energy or such things, but they contain information about what is happening inside the core of the sun. If we study these neutrons, then we can understand the process going inside the sun core.
The core is also home to variety of features including solar dynamo, which is responsible for sun's magnetic field. Yes. Next slide, please. Now we'll study solar dynamo. Solar dynamo is a process through which sun generates its magnetic field. So, uh, in the starting, the we had discussed the characteristics of the sun, and there we saw one characteristics which was escape velocity, which was much higher than compared to Earth. The reason behind that is sun contains plasma, and plasma contains charge. Charge. So by Coulomb's law, we know that it will have electric field, and by Ampere's law, because electric field is present, it will also have it will also have electric current. And if we study the Faraday's law, then we'll come to know that as current is flowing, and because of plasma is flowing, it generates magnetic field, and this magnetic field is different at different places. Like at pole it's different, it's at equator it's different because of the different speed of rotation. And due to this, sun create a differential rotation on its surface. So this was basically solar dynamo. Next slide. Now these are something very beautiful and yet very uh, dangerous phenomenon. These are known as auroras, and auroras are seen generally they are seen in at the poles like Antarctic or Arctic, or countries at higher latitudes like Canada, Greenland, like that. And there we can see this beautiful uh, lights called as auroras. Sir, you may skip the video. Like auroras are only there. These are the really beautiful videos. Now, if we want to see how these auroras are formed, then we need to understand that when sunspots are there, they really. Let me explain something before this. Uh, uh, in solar dynamo part, we saw about differential rotational speed of the sun. So, what happens is the sun's magnetic field lines are constant. So they sun has So, such a strong magnetic field, and due to differential rotation, this magnetic field line get twisted, and this twisting can be imagined by the twisting of wet clothes to drain out excess water. After washing clothes, we twist them so that excess water can be drained off, and they get dry quickly. We can imagine the twisting of uh, magnetic field lines in sun through this process. And at the point where these sun magnetic field lines break down in, and fall on the surface of the sun, these sunspots are created. And uh, yes, sir. In this, sir, stop. okay, here. Yeah. You can like basically this is an animation. So these lines which are originated from the uh, dark region known as sunspot, where the magnetic field lines which broken due to twisting of the due to twisting in the sun's differential rotation, and they have fallen onto the surface of the sun, and they have framed this uh, these sunspots. And now these sunspot throw the plasma into atmosphere, into the space. And when this plasma or this sun solar storm hit earth, earth's magnetic field tries to protect us from this. And in this animation, sir, yeah, now you can play the animation, that how auroras are formed. Yes, these things we have discussed right now, right?
Okay, so now let us study about Yes, solar rotation. some dangerous effects of these solar storms. Mm. Sir, can you just show one image that was before this news part? Yeah. So, solar rotation image. Okay. Yeah. Okay. Yeah, this one. So here you can observe that how this breaking of the s- sun's magnetic field happens, because at pole they are rotating at a very slow speed, and the equator they are rotating at very fast speed. So after this third image, these lines break and they fall on the surface. Uh, Sir, I have one animation which Okay. I added just before this presentation. So Yeah. can I show So that? sure, sure. I allowed you to share the screen. Um, Sir, I'll just turn my camera on and I'll able to show it to you. Okay. Just a minute. Because I have to put that on YouTube also. So I have to put your video in. Just a minute. Okay. So okay, you can play now. Okay, sir. This one is an animation where uh, uh, so- yeah. At this point, we can observe that these blue are magnetic field lines, and due to differential rotation of the sun, this at equator they are rotating very fastly compared to the pole. So due to which they break down and they twist and they break down and they fall on sun's surface, resulting into the formation of the black holes. Let's see, at this point they have started breaking down, and now they fall to the surface of the sun, and they create black hole. Okay. So can you continue? Yes, sir. Just a second. Now we'll study about solar storm. So this is the main reason for the auroras. And as we have seen in the previous animation about how these sunspots are formed. So solar storm is the ejection of the plasma of the sun from the sunspots. Next, please.
The image on the left, you can see solar storm and how it's affecting Earth's magnetic field, and how Earth's magnetic field is trying to protect Earth from this kind of phenomenon. Next, please. Here you can see one of the newspaper cuttings of New York Times, where we can say the devastating effects of solar storm. Solar storm destroyed new 40 SpaceX satellites in the orbit. And in the next image, there is a newspaper cutting of Times of India, where you can read the heading that monster solar frame disrupts the communication in US. Strong solar storm hit may hit Earth on December 17. This is not of 2024. This is of Yeah. 2023. So you can chill. सो वी कैन से कि अगर हमें पता चलता है तो एक आध दिन पहले हमें अलर्ट मिल जाता है इन सोलर स्टॉर्म्स का ड्यू टू इन फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आदित्य मिशन एंड अदर मिशंस कि जिसमें स्पेस वेदर को स्टडी करने की पूरी वो कैपेबिलिटीज होती है सो ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स वी हैव alert before almost 24 to 48 hours for all these kind of activities. Yes, sir. And in this animation, we can see as our Earth's magnetic sphere and magnetosphere protected us from the sun's solar Massive flare and solar particles, we can say. yeah, solar particles. And in the same way, the sun's magnetosphere and magnetic fields protects our whole solar system from interstellar radiation while it's revolving around Milky Way galaxy. This is also one more animation related to that only. Here we can see the various space missions done by various agencies to study the sun. And now the question arises, why to study sun? Uh, as we have ओके गाइज आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शेयर कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा यूट्यूब चैनल को और अभी आपके माइंड में जो कोई भी क्वेश्चंस हो वो अभी आप चैट बॉक्स में ऐड कर दीजिए तो एंड में हम उन सारे क्वेश्चंस को ले सकते हैं यस प्लीज कंटिन्यू thank you, sir. Uh, as we have discussed till now about the sun, सो आपको ये तो पता चल गया होगा कि सन को स्टडी करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसका नेचर बहुत ही डिफरेंट है। हमको बहुत सारी चीजें सन के बारे में अभी तक नहीं पता, जिसके जैसे कि कोरोना का टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों है जबकि वो सन के सरफेस से इतना दूर है, तो भी उसका टेम्परेचर इतना ज्यादा क्यों, जिसके बारे में हमें नहीं पता। सन स्पॉट्स को कंटिन्यूअसली स्टडी करना जरूरी है क्योंकि पीछे की हमने न्यूज पेपर कटिंग्स में देखा कि सन स्पॉट्स के कारण बहुत सारा मास डिस्ट्रक्शन होता है। और सिर्फ सैटेलाइट्स को ही नहीं, इवन जो अर्थ के ऊपर पावर ग्रिड्स है, ट्रांसमिशन लाइंस है, वो भी सब फेल हो सकते हैं अगर बहुत बड़ा सन सोलर स्ट्रोम आ जाए तो ये सारे वेरियस मिशंस है बाय वेरियस स्पेस एजेंसीज, जैसे कि आदित्य L1 जो कि इसरो का मिशन है जो भी रिसेंटली हुआ है, पार्कर सोलर प्रोब नासा का जो एक बहुत ही फैंटास्टिक मिशन है और ये सन को बहुत ही नजदीक से, लाइक ये सन के कोरोना के पास ही घूम रहा है और उसको स्टडी कर रहा है। फिर पायोनियर 5, 6, 7, 8 एंड 9 नासा के ही मिशन है जो प्रीवियस ईयर्स में उसने लॉन्च किए हैं। सोलर मैक्सिमम मिशन नासा का है। योको मिशन जो है वो जापान की स्पेस एजेंसी का है। सोहो जो मिशन है वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी और नासा का दोनों का कंबाइंड एक मिशन है। फिर स्टेरो नासा यस का एक एंड मिशन रहा। एक और इसमें ऐड ऑन कर दूं कि जो सोहो के जो कुछ भी डेटा है वो मोस्टली उसकी वेबसाइट पर विद इन अ फ्यू मिनट्स ऑफ रिकॉर्ड पब्लिक के लिए अवेलेबल हो जाता है तो आपको कभी भी कोई भी सन की इमेज देखनी है कि अभी सन कैसा दिख रहा होगा या फिर आज कितने सन स्पॉट्स हैं
ये सारी चीजें आपको सोहो जो है वो लाइव आपको प्रोवाइड कर रहा है, वी कैन से कि इतना वो रैपिड वो ओपन पब्लिक फोरम पे नासा एनईए से डाल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया सा मिशन है फॉर टू अंडरस्टैंड ऑल ऑफ अस अबाउट द सन, कि जिनके पास हम बहुत इजीली हम पहुंच सकते हैं, जिसके डेटा के पास। Yes, sir. And these are very few missions which I have named here. But if we see into the history, then approximately 150 to 200 missions have been planned and launched for the study of the sun. Means scientists also know that this is uh, from very uh, from very long time we know this. It's very important to study about the sun, and we are constantly making efforts to do this. To do this. Next, please. Yeah, in the on the image on the left side, you can see Aditya L1 with all its payload and their naming. You can avoid the image on the right side. It's basically it's not about Aditya L1. It's just an It's a image of kind of satellite artistic near the sun. representation. Yeah, but on the left side, it you can consider that image, and you can see all the payloads of Aditya L1 uh, in that image. Next, please. So when the Aditya mission was planned in around 2006 or 8, it was named only Aditya. The L1 added after that. So why L1 and what is the significance of this L1? So L1 means Lagrangian point 1, and Lagrangian points, there are total five Lagrangian points in our solar system. And these Lagrangian points are like points where if we place a satellite, then we have to use minimum fuel to make it stable there. Yeah, in this image, you can see these uh, s- five points. But now one question will be there that why L1 point only? There are other five, there are other 4 points you can place anywhere, definitely. But the benefit of point L1 is that if we place our satellite at L1 point, no solar eclipse or lunar eclipse or any other thing will obstruct our satellite to observe sun. Even when a solar eclipse happens, if the satellite is in any of the earth's orbit, though it's observing sun, but it will for a few minutes it will not be able to observe the sun due to the moon. So at if we place our satellite at L1 point, then we can observe sun constantly without any kind of disturbance. And if we place our satellite at point L2, you can see in this image L2 is behind Earth, and at L2 the James Webb Telescope is also being placed, has been placed, and due to Earth it might obstruct our view to the Sun. And point L4, L3, L4, and L5 are in the Earth's orbit. So at some point of time, Earth will pass through these points, and at if at that time solar eclipse would happen, then again it would obstruct satellite's view to observe the sun. So it was planned that if we are sending our satellite, if we are sending a 400 600 kg satellite to the orbit, first it was planned that we'll place the satellite in low earth orbit, but then it was planned that if we are sending such a mission, then why not give our best and place it in L1 at L1 point, Lagrangian point 1. ओके, सो आई वुड लाइक टू ऐड समथिंग ओवर हियर कि हमारे पुराणों में भी ये ऐसी एक कहानी है कि जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक्स है लैग्रेंजियन पॉइंट्स के, वैसे ही पॉइंट्स के बारे में कि जो विश्वामित्र ऋषि हैं, तो वो त्रिशंकु से प्रॉमिस करते हैं। त्रिशंकु वाज अ वेरी फेमस किंग। तो क्या प्रॉमिस किया था कि उनको विथ हिज ओन बॉडी वो उनको स्वर्ग लेकर जाएंगे। नाउ स्वर्ग लेकर जाना वो तो विथ बॉडी पॉसिबल नहीं है। सो वो उनको लेकर तो निकले,
लेकिन हुआ क्या कि वो उनको बीच में ही छोड़कर आ गए। तो ऐसी जगह पर छोड़ा कि जहाँ से वो ना तो ऊपर जा सकता है, ना ही नीचे जा सकता है, ना ही कोई ग्रेविटी उसको पुल कर सकती है, ना ही ग्रेविटी उसको कहीं थ्रो कर सकती है। So now these kind of imagination, if we consider our Purans and all, that also can be considered as a Lagrangian point. We can call it as a Trishanku point. Yes, sir. Uh, uh, so I name Aditya L1. Aditya means the sun in our Sanskrit literature. So first ISRO named the mission as only Aditya, but then the L1 was added as I spoke before, and the Aditya is a Sanskrit word which means undecaying or immortal, means the one which cannot die. But eventually, this spacecraft will die one day. But we have kept its name as Aditya, the Yes. immortal. And uh, if we L1 point is in a hollow orbit, which is around 1.5 million kilometers from the Earth, and it was much nearer from the Earth compared to all other points. We compare the distance from Earth and Sun, and if we compare distance from Earth to L1, it's about only approximately 1.1% of the distance from Earth and Sun. So it was easy for us to place a satellite. Basically, not easy, but comparatively much easy or for us to place a satellite in at L1. And the satellite carries total 7 payloads, which has diverse objectives, including to study the coronal heating problem, solar wind acceleration, coronal magnetometry, origin and monitoring of near UV solar radiation. Next, yeah, so all of these pictures are available in public domain and anyone can see them. So this is a VELC payload. VLC payload is a prime payload on Aditya L1 designed as a reflective coronagraph with a multi-suit spectrometer. And in this image, you can see VELC payload in a multi-layer isolation layer, wrapped in a multi-layer isolation. Next slide, please. VLC emission line coronagraph is designed to study corona and dynamics of coronal mass ejection. The payload is developed by Indian Institute of Astrophysics, Bengaluru, in close collaboration with ISRO. Next, we have SOOT payload. SOOT is a ultraviolet telescope to image the solar disk near ultraviolet wavelength. Means it will observe the sun in an ultraviolet wavelength, and it will study the sun in ultraviolet wavelength only. And this is a photo of a SOOT payload. And now Uh, it is used to image the solar photosphere and chromosphere in near ultraviolet UV and to measure the solar uh, irresidence variations in ultraviolet. The payload is developed by Inter-University Center for Astronomy and Astrophysics, Pune, in close collaboration with ISRO. Next. In this image, you can see two payloads. One is aspects and one is Swiss and steps, both combination. We call them as aspects payload. The aspects payload is combination of two subsystems, Swiss and steps. Swiss is solar wind ion spectrometer, is a very low energy spectrometer that is designed to measure the photon and alpha particles of the solar wind. Whenever there will be a solar mass ejection or a solar storm, and the this instrument Swiss will study the photons present in those solar solar wind. And the next is the steps, that is sup, uh, super thermal and energetic particle spectrometer, is a high energy spectrometer that is designed to measure high energy ions of the solar wind. So Swiss was designed to uh,
study low energy particles, and STEPS is designed to study high energy particles. The next is Papa payload. Papa payload is designed to understand the solar wind and its composition, and to do mass analysis of solar wind. Means uh, it will study what the solar wind is composed of. Now, if we might discover something new particle or new form of matter in the solar wind. Basically, solar wind is what the plasma on the sun's surface, which is thrown on the space. So it will study that, and studying solar wind also help us to study the type of plasma. If it also help us to understand the nature of the plasma, because on Earth we can create plasma in laboratories, but in uh, not in large quantities. But in solar storms, we can study this plasma on a large quantities. So Papa will study them. Papa payload will study them. Then then we have Solex payload. Solex is a soft X-ray spectrometer on board Aditya L1, and the payload is designed to measure the soft X-ray flux to study solar flares. The magnetic field lines of solar flares and the flux of magnetic flux of solar flares will be studied by this Solex payload. Then we have uh, L1OS payload. L1OS is a hard X-ray spectrometer designed to study solar flare in high X-ray in high high energy energy. X-rays. Like okay, now next. Uh, so sir, before one Solex low, yeah, Solex low energy X-ray spectrometer. Solex is a high energy L1 orbiting X-ray spectrometer, and are these both are designed to study X-ray of flares from the sun, and both payloads are developed by uh, UR Rao Satellite Center, Bengaluru. Now we have magnetometer payload. Magnetometer is meant to study the low intensity interplanetary magnetic field in the space. It has two sets of magnetic sensor, one at tip of a 6 meter uh, deployable bone, and other at middle of the boom 3 meters away from the spacecraft. If you remember the first image in the section of Aditya L1, there was a leg coming from the satellite, which is known as boom. So there are two magnetometers are fixed on this boom, one at 3 meter and other one at 6 meters from the spacecraft. Now, magnetometer payload is capable of measuring interplanetary magnetic fields at L1 point. Basically, it will study magnetic fields at L1 point, and the payload is developed at electro-optic system, developed at Laboratory for Electro-Optic System, Bengaluru. Yeah, in this video, you can see when Aditya L1 was launched, you can see the payloads which are wrapped in uh, sir, if you can draw back the video at around 9 seconds. Yeah. So in this part of the video, you can see VLLC payload and suit payload, which are attached to the L1, Aditya L1 satellite, and they are wrapped in multi-layer isolation. And this video was released by ISRO after the launch of Aditya L1 mission. Yeah. So now we have came to the end of our session, and all of the sources of audio, video, and animations, text were taken from Google, YouTube,
and some of the images were taken from Delhi to and mid journey. Thank you very much for your wonderful presentation. It is almost more than 90 minutes. Right now we are going to complete 100 minutes in just 1 minute. तो इतना ही लंबी टॉक के लिए बहुत ही धन्यवाद। और जिस तरह से आपने जो चीजें समझाई हैं, दे आर सो इजी, सो फ्लुएंट, सो आई थिंक हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको भी बहुत मजा आया होगा। सो क्या कहते हैं सारे पार्टिसिपेंट्स, थोड़ा उनका व्यू ले लेते हैं और फिर आज का जो ये सेशन है वो हम खत्म करते हैं। एक क्वेश्चन आया है, to understand more about our sun and other stars also. Okay, can you get the PPT? Yes, you guys can get us from the WhatsApp or so on other way you want. You guys can WhatsApp me at plus 919879554770. I'm putting my number in YouTube. So कभी भी आप जो क्वेश्चंस हैं वो शेयर कर सकते हैं। ओके, सो जितने भी हमारे जूम के साथ जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, आई वुड लाइक टू आस्क देम टू शेयर देयर व्यू। आपको कैसा लगा और क्या बेहतर कर सकते हैं, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। यस, कमला जी का मैसेज है, दिस सेशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग टू लिसन, थैंक यू फॉर हैविंग दिस एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर मोर सेशन लाइक दिस। If anyone is not connected with our WhatsApp group, they can just ping me on our mobile number. We will provide you the link. I'm putting my mobile number to WhatsApp chat, sorry, Zoom meeting chat also. So, Mist and Tech, आपका क्या कहना है? Hmm. Narendra sir, you are waiting for a long, you are enjoying the session, so you can share your expression, you can share your feelings too. ओके, तो स्ट्रॉन्ग रॉक आपको कैसा लगा ये आज का पूरा ये सेशन अरेंजमेंट और जूम पर हम जो मिले? सर बहुत ही अच्छा था। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको और स्टार गेजिंग इंडिया को थैंक यू बोलना चाहूँगा, मुझे एक प्लेटफॉर्म देने के लिए जहाँ पे मैं अपना आइडियाज शेयर कर सकूँ। और थैंक यू सो मच सर। ओके, सो इसी नोट के साथ हम अपना यूट्यूब ट्रांजिशन भी ख़त्म करते हैं। मिस्ट एंड टेक ने भी कहा है कि सेशन इज़ वंडरफुल, और इसी नोट के साथ आज का ये यूट्यूब सत्र भी हम समाप्त करते हैं। जस्ट वन क्वेश्चन, ओके, चलिए एक क्वेश्चन आ गया है, वो क्वेश्चन लेकर हम फिर ये सेशन को क्लोज करेंगे। Could you share your opinion and views about Betelgeuse going supernova in the upcoming months? It's wish of all our astronomers कि शायद हमें देखने को मिल जाए। बट अगर मैं मेरी पर्सनल बात करूँ तो ऐसा है कि ब्राइटनेस जो है वो बहुत ही वेरी कर रही है अभी कुछ समय से। जैसे 2-3 साल पहले एक बार बहुत ही डिम हो गया था, और वापस ही ऐसा ही एक डिमनेस अभी रिसेंटली कुछ मंथ्स में आया है। सो क्वाइट पॉसिबल कि अगर हमें देखने को मिल जाए, और
आप अगर उसकी ब्राइटनेस का ग्राफ और वो सब देखना चाहे तो ट्विटर पर एक हैंडल है एक्स पर, बीटल गूज का। सो उसके ऊपर आप उसका जो ब्राइटनेस में फ्लक्चुएशन आता है वो डे टू डे बेसिस पर चेक कर सकते हैं, एंड दैट विल बी द वंडरफुल थिंग टू ट्रैक इट। Kamla ji, thank you for your questions. And now we are concluding this session. Uh, Thank you very much for everyone who is attending this from YouTube, from Zoom. तो इसी के साथ आज का जो ये सेशन है वो यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले शनिवार मेरा प्रेजेंट रहना मुश्किल है शायद, लेकिन कोशिश करेंगे कि 13 तारीख शनिवार को हम वापस से किसी न किसी नए टॉपिक के साथ मिल पाए, इसी समय शाम को 6 से 7 के आसपास। चलिए मिलते हैं, और उस वक्त के लिए आप सभी को एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और सबके साथ सबका विकास करना है। हमारा भी इसी तरह से आपका जो इनविटेशन है, आप जो शेयर कर रहे हैं सभी दोस्तों के साथ ये वीडियोस, तो हमें भी अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंचे। धन्यवाद।